welcome to Digi Hunt. My name is Sadiq. So, ladies and gentlemen, we have with us Ms. Jaya Ahsan, the 5 times Bangladeshi National Award winner. And she has recently starred in a wonderful Bollywood film that we get to see on Zee5. It's called Kadak Singh, along with Pankaj Tripathi. And she is playing the love interest of Pankaj in the film. So, Jaya, सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यू आर वेरी फेमिलियर विद बंगाली फिल्म्स. इंडिया में जो बांग्ला फिल्म्स होते हैं, द काइंड ऑफ एक्टिंग एंड द सिनेरियो दैट दे हैव एंड द स्क्रीन प्ले वी हैव, यू वेरी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट. हिंदी फिल्म्स और हिंदी एक्टर्स वगैरह के साथ बात करना आपको कैसा, मतलब काम करना आपको कैसा? एक ही बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि एक्टर्स जब काम करते हैं तो वो उस टाइम तो उसका सामने और कुछ नहीं दिखाई देता है. तो जब मैं पंकज जी के सामने खड़ी हूँ और एक्ट कर रही थे, उस टाइम मैं ऐसे ही सोचा कि मैं नैना हूँ और वो एक ही है. ऑफ कोर्स ही इज स्टॉलवर्ट लाइक आर्टिस्ट लाइक हिम. थोड़ा तो नर्वसनेस पहले वैसे आप कम नहीं है, लेकिन आप कम नहीं है. यू हैव वन द नेशनल अवार्ड ऑफ बांग्लादेश 5 times. So, and you are marvelous. मैंने फिल्म देखी थी before it was screened on Zee5 itself. I'd seen the screener and I loved your part, the restraint, your facial expressions and everything for that matter. It was so apt that I was like, why wasn't she there earlier? I mean, what stopped her? Didn't she get any offer? Didn't any casting director approach her? I mean, this is sheer talent and hats off to you. I loved your work. Thank you so much. तो वही है, बहुत अच्छा लगा कि मैं तो बहुत साल से काम कर रही हूँ यहाँ एक्टिंग पे हूँ. तो जब मैं काम कर रहे थे वहाँ थोड़ा मेरा जो प्रॉब्लम था, थोड़ा मेरा जो चैलेंज थे, पहला चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर. आप तो दिखाई देंगे कि मैं हिंदी में इतना साफ नहीं हूँ अभी भी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ. तो ये मुझे हासिल तो करना ही है. तो इसके अलावा और कुछ चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं था. और एक है कि ये पूरे फिल्म सिंग साउंड में शॉट हुई थी, तो इसीलिए करेक्शन करने का कुछ मौका नहीं थे वहाँ पे. हाँ, डबिंग में क्या होता है, वो हम लोग करेक्शन करते हैं, करेक्शन कर सकते हैं. तो सिंग साउंड में तो ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये थोड़ा चैलेंजेस थे करेक्शन के लिए. इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं थे. लेकिन मैं बहुत मेरा जर्नी वाज वेरी वंडरफुल जर्नी. इट वाज अ वंडरफुल जर्नी विद अ वंडरफुल टीम. सो मैंने बहुत एंजॉय की थी. बट जया, आई फील दैट यू वर phenomenal in the film. You had to portray the role of the second woman. Of course, the other towards woman, yes. I mean, for a The person society. who's already married. Yeah. Yes, for a person who's already married and he has a young girl and this person has had a problem in his past, and how he kind And he of has a stayed at the hospital bed. dysfunctional family, of It course. is wonderful. It was wonderful. It was very complicated, and the way you know came out, it was triumphant. It was beautiful. It was just wonderful. I mean, watching you was an eye opener. In India, I would say, especially Bollywood now at this space, very few actresses are there who can emote the way you have emoted in such a restrained manner. In fact, No. I felt somewhere. Okay, thank you. I'm telling you. Yeah. No, I'm telling you. And it was very natural as well. That language barrier, that Bengali thing, that Bengali MTI, mother tongue influence that was coming in when you were speaking the language, it was perfectly justifiable because that was justified because the character's background is from Bengal. Yes, exactly. You know? And not just that. That was just 20% of the entire thing. Mostly, you emoted through your, the way you uttered a particular word, the way you nod your head, the way you look at somebody. So it was all over here. It was playing here. Oh. So nothing else was required. Thank you this so is what much. Bengali talent does. Much. I'm blushed. Thank you. It is a fact, Jaya, and you were wonderful. I personally would like to see you in or many other films, especially performance-oriented films that are made in especially that's my genre basically. Bollywood mein to kind of films that have been of course some meaningful काम करना चाहती हूँ. Exactly, some meaningful work.
So it was really lovely watching you. The second thing that I have in my mind right now is, uh, today when you look back at your career, do you have any grievance, कुछ है जिसके बारे में सोच के ऐसा लगता है काश ये होता, नहीं, या बिल्कुल आज अगर आपको ये चांस मिला है, हालांकि पता है नहीं ना। सॉरी सॉरी क्या? चांस किसका चांस? हाँ, मतलब आज अगर आज ये जो चांस मिला है आपको टू बी अ पार्ट ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म एंड हुँ, टुडे यू गेट टू शोकेस एंड वी एज ऑडियंसेस आर सो डिलाइटेड टू सी यू इन दैट पार्ट एंड हुँ, सी हुँ। समवन सो प्लेइंग द पार्ट इन सच एन अडेप्ट मैनर, इतनी खूबसूरत तरीके से प्ले किया उस पार्ट को, लिखा गया, जिस तरह से लिखा गया है उससे डबल आपने मेरे हिसाब से किया है। So, an actress who can actually play such complicated parts, do you think that, हालांकि आपको आपके फिल्म करियर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स आपको खेलने, मतलब पोर्ट्रे करने में आपको मौका मिला है, लेकिन it was in Bangladesh and very few Indian films and Bengali films, Bangla films, but in Bollywood where the audience is huge. आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? Audience is huge. More people are going to see. When you're getting that stage in such a point of in such a juncture of your life, do you think that पहले थोड़ा मिलता था तो? अ, क्या है मैं ये महसूस करती हूँ क्या एक आर्टिस्ट के लिए लाइफ का जर्नी बहुत ज़रूरी है। तो हम्म, और मेरा जो कमती है, मेरा जो शॉर्टकमिंग्स है, ये सब लेके मैं अभी का जया हूँ। मैं जो गलतियाँ करी हूँ, तो इसको मैं गलतियाँ नहीं बोलना चाहती हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस है और मैं absolutely. यहाँ हूँ एक मैच्योर आर्टिस्ट होने का मैच्योर आर्टिस्ट नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैच्योर आर्टिस्ट की तरह मैं काम करना चाहती हूँ। ये सब तो मेरा मुझे कैसे आई, तो मेरा ये लाइफ जर्नी बहुत हेल्प किया है। इसके अलावा ये लाइफ जर्नी और ये समय नहीं रहने से मैं तो ये नहीं हो सकते थे, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं परफॉर्मेंस कर ये अगर थोड़ा पहले होता तो मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा ही होता, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता। आज आप जो हम्म, मुझे ये प्रेज़ कर रहे हैं, ये शायद नहीं मिलते थे उस टाइम पर। तो मेरे पास ऐसा नहीं लगा कि बहुत देर से शुरू किया है और देर हो गया, ऐसे कुछ ये मुझे आई वोंट टेक दिस वन। आई थिंक आई एम इन अ राइट ट्रैक, इट्स फाइन, स्लो एंड आई बिलीव इन स्लो एंड स्टेडी। right, right. You were a part of the Bangladeshi repertoire of films for a long time. There were some Bangla films also in India that you were a part of. And how would you compare Bangladeshi films in Bangla films that you were a part of Mhm, vis-a-vis Bollywood mhm। and the films that are made in Bollywood? वो किस तरह बॉलीवुड से तो देखती हैं? बॉलीवुड तो बहुत बड़ा जायगा है, चांसेस भी ज़्यादा हम्म, है, रिस्क्स भी ज़्यादा है और क्या है बहुत बहुत ये इसका होराइज़न ज़्यादा है और बंगाली फ़िल्म भी बहुत अच्छे किए, लेकिन मैं ये नहीं बिलीव करती हूँ क्या मुझे अम, ऐसे फ़िल्म करना है, ऐसे फ़िल्म जो मैंने किया है मैं जिस फ़िल्म्स के पार्ट हूँ अभी भी, तो ये सब फ़िल्म्स मीनिंगफुल फ़िल्म्स हैं और नाउअडेज़ आई थिंक लोकल इज़ द न्यू ग्लोबल। अभी तो हम्म, बंगाली फ़िल्म्स और क्या एक मलायाली फ़िल्म्स और क्या एक श्रीलंकन फ़िल्म्स, ये Bollywood films, of course, it's a big stage, but apart from that, the local people, everyone wants to see their own how they portray their own culture, own culture, their own way of yes, thinking, and their way thought diversity, process and everything. ये सब ये सब प्रोसेस क्या है देखना चाहते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बंगाली फ़िल्म में मैंने जो भी काम किया है, वो भी बहुत ही हम्म, मीनिंगफुल है, अच्छा है और समहाउ ये फ़िल्म्स सब स्टैंड कर गया है, स्टैंड्स आउट किया है। लाइक बांग्लादेश में मैंने हम्म, जो भी फ़िल्म किया है, ये सभी फ़िल्म और कोलकाता का भी जिस फ़िल्म मैंने किया है, तो ये सब फ़िल्में हम्म, इंटरनेशनल सर्किट में और क्या है फेस्टिवल सर्किट में बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है। बहुत सारी फ़िल्म्स हैं, मैं मेरा वो बहुत ही मान्यता मिला है।
फ़िल्म फेस्टिवल्स में। तो ऐसे कुछ फ़िल्में मैं Now, this is not what I'm हाँ, saying. What I'm saying is, I mean, you are an extraordinary actor. I mean, I saw the film and I realized that, and I knew that. हुँ, You're a हुँ। wonderful actor. I'm not saying that, in Bangladesh, what kind of अच्छा, films अच्छा। you have done. I've done my काम का research, so कल्चर I क्या know. ओके, ओके। हुँ, हुँ। You are a phenomenal actor, and this is no mod. You don't have to be modest about it. It's a fact. You've got the craft. You have it in your arms. I mean, you have it in your mutti for that matter. So that is not the question that I asked. What I asked is, in terms of films, जिस तरह के films वहाँ बनते हैं, as opposed to जिस तरह के films यहाँ बनते हैं. हुँ। What difference do you see? जैसे for instance, डिफरेंस है a masala डिफरेंस है film. हाँ, नहीं, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेनस्ट्रीम फ़िल्म्स तो ज़्यादा होते थे एक टाइम पे बॉलीवुड में और अभी बहुत सारे Mhm. मीनिंगफुल फ़िल्म्स ओटीटी के बारे में ओटीटी पे भी हो Yes, only on OTT. Only on OTT. And one more question that this actually entailed. ये जो the pura conversation, the entire conversation that हुँ, we had right now, it actually brought out one more question in my mind. Satyajit Ray, he once very famously said that India is actually full of um, down market and crass audiences who are very well aware of only the popular Bollywood films or Naach Gana and Gincha Gincha. That's not the kind of films that I would like to make. That's not the kind of film that I would see myself. So I make the kind of films I love. I make the kind of films I like, ऑफ and I कोर्स, would want to ऑफ कोर्स। watch. He said that. Shotajit Rai, there is a very famous interview. How much do you, as a person who actually works in films which are meaningful and not too much of a photo for Fevicol, what I'm saying is, mostly in Bollywood, such popular films are made. I mean, you will not really see a Rituparno Bush kind of a film being made in Bollywood. Or you will not really see, someone making a film like Bade Bahire in हुँ, Bollywood. हुँ, ऑफ You know कोर्स। what I'm saying? येस, येस, आई So, अंडरस्टैंड। what I'm trying to ask you is, as a person who is drawn towards, I'm talking about you, as a person who is drawn towards meaningful cinema, how do you see this kind of film, and how do you see the mindsets of the audiences who teaches meaningful cinema and watch these films? देखिए ये ऑडियंस तो बहुत सारे फ़िल्म्स बहुत तरीक़ा का फ़िल्म्स होगा प्लेटफ़ॉर्म में। ऑडियंस विल चूज़ व्हाट ही विल टेक और शी विल टेक। And at my point of view, every films matters क्योंकि जो मेनस्ट्रीम फ़िल्म्स उसका भी बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पर तो वो भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन हाँ, ये भी ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड मूवीज़ में आप देखें तो और या Yes. कुछ कुछ इसमें थोड़ा कुछ कमी है बॉलीवुड फ़िल्म्स का। बॉलीवुड Mm, जो फ़िल्म्स बनता है, वो थोड़ा कमी है, लेकिन अभी तो बहुत सारे अच्छे फ़िल्म्स भी हो रहा है। और ख़ास करके mm, right. ओटीटी के लिए तो अभी बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो गया है क्योंकि ओटीटी में Absolutely. बहुत सारे Absolutely. एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट्स और थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी Yes. कंटेंट्स भी रहते हैं। तो ये सब क्या बैलेंस कर रहा है अभी और बहुत सारे अच्छे फ़िल्म्स भी मेरा स्कूलिंग जिसका है, Mm, तो ये सब भी अभी हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा अभी इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, मैं यहाँ पे भी ऑफ कोर्स काम करना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैंने बांग्लादेश में किया है और कोलकाता में भी किया है। हाँ, बांग्लादेश में भी ऐसे ऐसे ही फ़िल्म बनता है कि वो कुछ होता है अ, फेस्टिवल सर्किट और मीनिंगफुल सिनेमास जो मैं बिलीव करती हूँ और कुछ होता है लाइक ऑडियंस मैस पीपल के लिए तो दोनों को ही ज़रूरत है मेरे mm, ख्याल से दोनों को ही ज़रूरत है और ये ऑडियंस खुद ब mm. खुद लिटरेट हो जाता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है अच्छे फिल्म्स देखने से तो ओटीटी Yes, इज yes, अच्छे films देखे. You know what? I'll tell you something. I'll tell you something, Joy. ओटीटी अभी Uh, बहुत अच्छे काम कर रहा है इस पे क्योंकि ओटीटी में yes, घर yes, yes. घर बैठ के OTT बहुत अच्छा काम सारे कर. फिल्म हाँ, बिल्कुल You know what? I'll tell you something, Joy. I still
remember I was at Yash Raj, and I had to interview Ranbir Kapoor. So उसके पहले एक ग्रुप काइंड ऑफ अ सेशन था विद जर्नलिस्ट एंड एवरीथिंग एंड उसमें मैंने सुना था रणबीर जर्नलिस्ट को एड्रेस करते करते ही सेड दैट यू नो फिल्म मेकर्स शुड नॉट मेक फिल्म्स व्हिच आर वेरी पर्सनल filmmakers Sorry, should sorry. not make filmmakers should not make films which are personal. This was a particular statement that he gave. Mhm. So I got a little irked. And as far as journalists, and I'm saying this on camera, as far as journalists and entertainment journalists in Bombay are concerned, they don't really, because they are under a big name. For instance, I am under Hindustan Times. Mhm. But I have the liberty to say certain things. Mhm. But others, they do not say, even if I don't know whether they know it or they don't know it or they don't have the this thing to say. I mean, they don't want to say they have to be in the good books or whatever. In that interview, I literally took up that point and it Mhm. was a big ruckus. So he said, filmmakers should not, yes, filmmakers should not make personal. Ranbir, your own grandfather, he made Mera Naam Joker and it was one of his most personal films ever and it is a classic till date. Of course. How can you make a statement? Mhm. How can you make a sense saying that filmmakers should not make personal films? I mean, if you're a filmmaker and you're making a film, firstly, film is predominantly an art form. Mhm. If you want to portray something, it is a very personal thing. Godard, for instance, he makes films for his own people. आमी Of फिल्म course. बना मैं फिल्म बनाऊंगा और मैं Mhm. अपने लोगों के लिए देखूंगा दुनिया को छोड़ो as long Mhm. as I understand what I'm making and my people Mhm. understand what I'm trying to show. But end of So the day, filmmaking, hmm, end of the day, yes, tell me. end of the day, the all filmmakers wants that everyone will watch his film and appreciate his film. Yes, yes, absolutely, absolutely, given, absolutely right. वो दर्शकों के But लिए बनाता बिल्कुल, बिल्कुल. But when I stated that, everybody jumped into that. All the है. journalists were like, yeah. And now that you said that audience को जब अलग-अलग देखेंगे films, तब उनका खुद का दिमाग खुलेगा. This is what you said, remember? Yes, yes. Now, in Bollywood particularly, if you're Mhm. making films which are crass, you're making films which are rubbish. You're making films with lyrics like "मेरे फोटो को सीने से चिपका दे फेविकॉल." You're making films with lyrics like I don't know. I don't even remember the songs, the lyrics of the songs these days because they're so. Uh, what will the audience see? The audience will watch whatever the content creators are making, and they are showing in the screens. They will not. They will not make their own film. Huh? Today, what audience sees mostly Instagram reels, audience sees Twitter, audience sees all of those other apps that are there. What they see in those what they see in those reels, what they see in those what content is there? All crass content. You will not really see anything meaningful until and unless you yourself post something meaningful, and whatever handful audience sees that. But even then, that is not appreciated. Why that is not appreciated? Because that culture is not in them. You Hmm. know what I'm saying? If you watch, if people who are content creators in the reality of the sense, you're a filmmaker, you're making a film. I know budget is important. I know your profit is important. But at the same time, a CSR, corporate social responsibility should be there. When Of you're putting course. out things, make them understand, make audiences see things which they haven't seen. If you're putting up trash things, you're putting up porn on a soft porn, for instance, animal, for instance. Mhm. It was such a misogynistic film. I'm taking the names of these directors, I'm taking the names of these films, and I'm putting it very blatantly, and that's what I do. I'm literally infamous in my media circuit because I do Yeah, this. you know. But I don't give a I don't give a shit. It is a fact. It is a fact, and people should actually have the voice to call out such films and filmmakers. Now I don't understand. Now, if you're making this film, there were other films based on father-son relationships which were very critical. You have Vikramaditya Motwane's that film Ronit Roy and I haven't his seen son. it. I don't remember the name of the film. Yes, so there were many films, a very complicated subject, and this is what you make out of it. Mhm. Mhm. So what I'm saying is what you just said that audience को जो दिखाया जाएगा वही देख के धीरे धीरे वो but audience को अगर rubbish पसारा जा रहा है
audience will see that because you have Alia Bhatt and you have all of these big names. So people, they don't know much. They don't know any better. They are not. Everybody's not a cinephile. Everybody's not a cine Of course lover. not, of course. Everybody's not a There should cinema. be a benchmark. There should be a benchmark. क्या है? Exactly. हम जो अभी ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो ये बहुत ही Hmm. खास करके ये इंडियन फिल्म्स बहुत आइकनिक जगह में है एक वो तैयार करने के लिए क्या है सॉरी मेरा फोन That's it. चला That's it. तो That's it. हाँ ऑडियंस टेस्ट ऑडियंस बहुत क्योंकि बांग्लादेश में तो फिल्म फिल्म के ज्यादा टेलीविजन बहुत आइकॉनिक है सोसाइटी के लिए तो Yes. ये बहुत ऐसे ऐसे बॉलीवुड में है और इंडिया में है ऐसे ही है लेकिन क्यों है ये दर्शकों को भी कुछ पार्टिसिपेट करने का जरूरी है क्योंकि एक फिल्म जब बनाते हैं ये सिर्फ जो फिल्म का लोग जो है हम जो फिल्म में बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं वो सिर्फ ये फिल्म नहीं बनाते हैं दर्शक जब पार्टिसिपेट करेंगे तब ये फिल्म पूरा हो पाएगा Absolutely. Absolutely. Very right. Unfortunately, that is not the yeah. case. Okay. Now, what one more thing that I want to ask you is what are the kind of films that you personally want to do? If I mean, I'm sure many directors have seen your work, and I'm sure you're going to be flooded with work because of the kind of मुझे talent that ऐसे you कुछ have. नहीं है And I मैं really hope ऐसे so. थैंक यू मैं ऐसे कुछ काम करना चाहती हूँ जो अम, मुझे बिल्कुल क्या है ऐसे फिल्म पसंद है कि पहले तो ये थोड़ा ऑफ कोर्स द मीनिंगफुल फिल्म एंड जिसमें मेरे कैरेक्टर फिल्म के हिसाब से जरूरी है डेप्थ है जिसमें डेप्थ है Yes. थोड़ा जिसमें जरूरी है और स्टोरी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे ऐसे Mhm. कैरेक्टर मैं पसंद करूंगी लेकिन ये स्टोरीज भी ऐसे ही होना चाहिए जिसमें एस्थेटिकली ये ठीक ठाक फिल्म है और क्या है इसमें कुछ अम, मैं क्या बोलना चाहती हूँ मैं जिसमें जिस Vulgarity. फिल्म में कुछ कमिटमेंट्स है टुवर्ड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स द ऑडियंस Okay. टुवर्ड्स एनीवन या ऑफ कोर्स ऐसे कुछ मीनिंगफुल फिल्में करना चाहती हूँ और कुछ फिल्म में भी मेरा काम करने से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है एज लॉन्ग एज माय कैरेक्टर शुड बी लाइक Yes, it should be इट्स good. अ It should be meaty. part of yeah it will fulfill my requirements of course Right, Jaya. And I also know that you're a wonderful singer. no don't ask me for Oh, anything come on, Jaya. no today Just not two today I will lines. sing a full song for बहुत बहुत वो लग गया नहीं ठंड लग गए आज श्योर मैं अच्छा अच्छा ओके ऑल बाद राइट में ओके श्योर ओके आई ऑल राइट प्रॉमिस यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको सब मुझे भी ऑडियंस बहुत अच्छा लगा तरफ स्पेशली यू से बांग्लादेश की लुक तरफ से सो बहुत ब्यूटीफुल सारी सो प्रिटी सो रेडिएंट ना it's okay. बहुत अच्छा लगा अच्छे रहिए और फिर से हम ऑफ कोर्स विल कनेक्ट थैंक यू सो एब्सोल्युटली मच इट वाज थैंक यू सो वंडरफुल मच Joya. It was lovely थैंक talking to यू you too. Thank you so much for your time, and I really apologize for the delay once again. It was lovely having you, and it was a wonderful and a very enlightening conversation. It was not really an interview. It was a very nice, yes lively it was an adda conversation. it was an adda and I It was an adda. keep It was an adda. It yes was lovely. It was lovely. All right. So, ladies and gentlemen, with that, we come to the end. This wonderful, wonderful repartee with this wonderful actress, this beautiful lady, Jaya Ahsan. And I really hope to see her more in Bollywood, in the Bollywood repertoire, in OTT, everywhere for that matter, because of her immense talent. And I really vouch for the fact, please go and watch Kadak Singh on Z5. Jaya has done a phenomenal job. And I'm sure if you understand cinema, if you understand acting, I'm sure you're going to love. So, Joya, it was lovely talking to you. Thank you so much. thank And you we'll too really catch up sometime later. thanks to my audience and of course your listeners and audience also thank you so much Thank please you. watch correct 5 and give Absolutely. me Absolutely. feedback thank you Absolutely. bye bye All right, yeah Joya. This was Sandeep with TG Hunt signing. Let it go.